Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your maths class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your maths class. So students, in our previous session, we were doing exercise 14.1 and we have already done up to question number 7, and today we are going to start with the next sum of the same exercise, that is 14.1. So the next question from exercise 14.1 is question number 8. Okay, so I'll just write the topic on the board, that is exercise 14.1. So this is the next exercise that we are going to do here. Okay, so now in the question number 8, in the figure name the following parts of a circle. Okay, so देखिए हमारे पास एक फिगर दी हुई है, so I'll just draw the figure on the board. Okay, so अभी मैं बोर्ड पे एक फिगर बना रही हूँ, so you just look at it very carefully. So the sum number is 8. Okay, so now the figure is like this. It's a circle, and make sure you make this circle with the help of the compass. तो आप जो सर्कल है वो कंपास की हेल्प से ही बनाएंगे. दिस इज मस्ट. ओके, सो दिस इज अ सर्कल with the center point P. Okay, then a line passes from here, that is a diameter. So center point से होते हुए एक line जा रही है, that is AB. Okay, so this is the figure that is already given in your book. I am drawing from here only. Next is another line from point P is given, that is P to Q is this. Now one more, that is L and M. Okay, L and M. L and M. That is L. Okay, now देखिए हमारे पास ये फिगर दी गई है, उसमें ये सब कुछ ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है. ऑल द थिंग्स आर मेंशन, ए बी सी डी, ऑल द नेम्स इज गिवन. एंड नाउ यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ सर्कल. अब आपको ये जो जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं सर्कल के, उसका नेम बताना है. व्हाट दे आर कॉल्ड. ओके, द फर्स्ट वन इज द सेंटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to name the center. What is the center? What is the name of the center? So center of the circle. What is the name of the center of the circle? That is P. तो देखिए जो हमारा ये पॉइंट है, द मिड पॉइंट, जहां से हम सर्कल को ड्रॉ, जहां पे हम कंपास रख के स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना. सो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. सो द सेंटर इज point P. You can write it as P also. उसके बाद आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके, एरो ड्रॉ करके लिखिए सेंटर. ओके, फिगर में भी लिखिएगा, अलग से भी लिखिएगा, सो दैट इट इज क्लियर टू ऑल. यहाँ पे थोड़ा छोटा लिखा जाएगा बेटा. ओके, दैट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. ओके, सो बट हियर इट विल बी क्लियर, दैट इज पॉइंट P. सो पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द circle. Now the B is radius. Now you have to tell the radius. What is the radius of the circle? That is PQ. देखिए radius क्या होता है? Radius is the half of the circle. Okay, जो radius क्या है वो circle का half होता है. That means diameter का half होता है. Point से लेके सर्कल के ऊपर कहीं भी कोई लाइन जाती है, बट इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ओनली. ये नहीं कि एक पॉइंट से यहां से लेके वहां तक जाए या बीच से पास हो. दैट इज नॉट एट ऑल अ रेडियस. सो रेडियस स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंड्स एट एनी प्लेस ऑन द सर्कल. सर्कल में कहीं पे भी, चाहे आप यहाँ ड्रॉ कर लो, यहाँ 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 कहीं भी, बट इट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ओनली. सो हियर यू कैन सी पी क्यू. The line P, this line starts from P
and it ends at Q point on the circle. So the radius is, the radius of the circle is PQ. So the radius of the circle is PQ. Now the C1, the C part is given in this C. Okay, now you can write it like this. Radius, this is the radius. This is the radius. C1. In the C1, you have to write what chord. C1 is the chord. You have to find the chord or name the chord. So the chord of the circle is LM, yeah, ML. You can write LM or ML, whatever, both are same. So the chord is ML. So what is chord? जो chord होती है वो circle के 2 points पे touch कर, 2 जगह touch करते हैं. A chord touches the circle at 2 points, but it will not pass through the center of the circle. जो chord है वो कभी भी circle के center से pass नहीं होती. A chord never passes through the center of the circle. It is drawn from one point to the another point of the circle. ओके, अब सर्कल के ऊपर कोई भी एनी पॉइंट्स कहीं भी ले लीजिए और वहां से एक लाइन पास कर दीजिए. जस्ट वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट दिस लाइन शुड नॉट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. जो वो लाइन है वो सर्कल के सेंटर से पास नहीं होनी चाहिए. लाइक एल एंड एम, ये देखिए जो सर्कल को 2 साइड्स पे टच कर रही है. सो इट इज टचिंग द सर्कल एट 2 साइड. दैट एल पॉइंट एल एंड पॉइंट एम पे टच कर रही है, बट इट इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर. So it is a chord. Okay, so the chord of the circle is LM. So the chord of the circle is LM. So you can just write it here as well. You can draw the arrow and write chord. CHORD. That is the chord. That is the chord of the circle. Okay, I just write it properly. So this is the chord of the circle. CHORD. So this is the chord of the circle. Okay, so the chord is LM लिख लीजिए, M या ML लिख लीजिए, both are same. Now the last one is the D1, that is the diameter. Now you have to find the diameter. So not to find, you have to name the diameter of the circle. अब आपको circle का diameter बताना है. Now you have to tell the diameter of the circle. So diameter is a line that touches the circle at 2 points, but that line passes through the center of the circle. जो diameter है वो क्या है? Diameter circle के ऊपर, okay, जो सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स को टच करे. सो डायमीटर लाइन दैट स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट एंड मीट्स एट द अनदर पॉइंट ऑफ द सर्कल, बट दैट लाइन मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. बट वो लाइन सर्कल के सेंटर से पास होनी चाहिए. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द कॉर्ड एंड द डायमीटर. कॉर्ड नेवर पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. जो कॉर्ड है वो कभी भी सर्कल के सेंटर से पास नहीं होती, but a diameter always passes through the center of the circle. And one more thing, that diameter is the double of radius. अगर radius का आप देखें, अगर radius क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, that is half है. but अगर इसी radius को आप इस point से लेके यहाँ भी ले जाएंगे, पूरी एक सीधी line बन जाएगी. So that will be the diameter. So radius is the half of diameter. या आप कह सकते हैं diameter is the double of radius. And what difference between chord and diameter is that the chord never passes through the center of the circle, whereas a diameter always passes through the center of the circle and it touches the circle at 2 different points. Okay, so जो diameter है हम वो center से pass करते हुए circle को 2 different points पे touch करती है. So the name of the diameter in this figure is, that is AB. So the diameter of this circle is AB. This AB is the diameter of the circle, and you can name it like this: diameter. DIAMETER.
दैट इज द डायमीटर। आप इसको मेंशन भी कर सकते, दैट दिस इज द डायमीटर। लिख लेंगे बेटा, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा दैट दिस इज द डायमीटर, दिस इज द रेडियस, दिस इज द कॉर्ड एंड दिस इज द सेंटर। सो दीज आर द 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द सर्कल दैट यू मस्ट नो। ठीक है, ये 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं किसी भी सर्कल के जो आपको पता होने चाहिए। द फर्स्ट इज द सेंटर, सेकेंड इज द रेडियस, थर्ड इज द कॉर्ड and the fourth is the diameter. Okay, so you can just pause the video here and write down the solution of question number 8 of exercise 14.1. Now moving to question number 9, the radii of the circle are given, find the diameter. Radii means radius, radii means radius. तो सर्कल का रेडियाई दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड द डायमीटर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 is the radii of the circle is given and we have to find the diameter. Okay, so देखिए रेडियस क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू टू इंटू रेडियस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू राइट इन द बिगिनिंग ऑफ द टॉप दिस क्वेश्चन नंबर 9। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 की शुरुआत में लिखना होगा। Diameter is equal to 2 into radius. Now, in A part, the question is that, देखिए in question number 9, the radius of the different circles are given and we have to find the diameter. So, the A is 8 centimeter. So, the radius of a circle is 8 centimeter and we have to find the diameter. लिखेंगे रेडियस, ओके, प्रॉपर लाइन लिख के करें, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू दैट इज 8 सेंटीमीटर। ओके, diameter of the circle, diameter of the circle, that we have to find. Diameter of the circle is equal to 2 into radius. 2 into diameter of the circle is 2 into radius. 2 into radius. Radius कितना है? The radius of the circle is 8 centimeter. So you will write 8 centimeter. So 2 8s are 16. So the answer is 16 centimeter. So the radius of the circle is 16 centimeter. So the diameter. So the diameter of the circle is 16 centimeter. Okay. So देखिए हमारे पास डायमीटर का, मैंने आपको पहले डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला किया, दैट इज 2 इंटू रेडियस। मैंने आपको जब प्रैक्टिकल अभी करवाया था इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर एंड डायमीटर इज द डबल ऑफ रेडियस। सो यहाँ पे रेडियस दिया है एंड वी हैव टू फाइंड आउट diameter. So for that we are going to multiply it with 2. So after multiplying 2 with radius you will find the diameter easily. So this is the solution of question number this is the question, solution of A part of question number 9. So you can just pause it here and write it down. Okay. Now in the B part, thus radius is given as 10 centimeter. Okay, again you have to find the diameter. रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर और आपको क्या निकालना है, डायमीटर. तो देखिए बिल्कुल एज इट इज जस्ट लाइक दिस ए पार्ट, आपको बी में भी यही करना है.
Radius of the circle is 10 centimeter. Diameter of the circle is equal to 2 into 10. That will be 20 centimeter. Okay. So C is 15 centimeter. So this question number A, B and C, these three are the same. So you are going to do B and C part of question number 9 of exercise 14.1 by yourself only. Okay. So देखिए next हम start करते हैं to the part D of question number 9. इसी question का part D हम करेंगे. Now let's do the part of question number 9. D part is the radius of the circle is 9 decimeter. DM decimeter. So the radius of a circle is 9 decimeter. So now पहले तो हमारे पास सेंटीमीटर था, हमने वही किया. And now it is given as decimeter. So what you will do? चाहे यहाँ डेसीमीटर हो, मिलीमीटर हो, सेंटीमीटर हो, किलोमीटर हो, whatever it is given, the formula for finding the solution will be same. Solution find out करने का formula बिल्कुल same है. Okay, that doesn't matter कि unit कौन सी दी है पीछे. Okay, so देखिए again, radius of the circle, radius of the circle is 9 decimeter. Okay, diameter of the circle that we have to find. Diameter of the circle is that we have to find. The diameter of the circle is 2 into radius. So the diameter of the circle is 2 into radius. Okay, the diameter of the circle is 2 into radius. Now formula is 2 into radius, that is 2 multiply by radius is 9, so we will write 9, that is decimeter. 2 multiply by 9 decimeter, that will be 2 9s are 18. 2 9s are is 18, so the answer is 18 decimeter. So the answer is 18 decimeter. So the diameter of the circle is 18 decimeter. Okay, बिल्कुल एज इट इज जो हमने ए पार्ट किया था वैसे ही है, बस यूनिट चेंज है, तो द फॉर्मूला फॉर डूइंग दिस सम इज सेम. ओके, I'll do one more part of the same question and rest of the parts of this question, okay, you have to do by yourself. जितने भी जो बाकी बचे हुए parts हैं बेटा of question number 9 of exercise 14.1, that you are going to do by yourself. So I'll do just one more part and rest of the parts you are going to do by yourself. So the next part is E part. That is the E part. So E part, here the E part, it is given that the radius of a circle is 2 meter. So the radius of a circle is 2 meter and we have to find the diameter. So the radius of a circle is 2 meter. Again, radius of the circle, radius of the circle is equal to 2 meter. Radius of the circle is 2 meter. Diameter of the
सर्कल, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 2 into radius. Again same formula, diameter is 2 into radius. Okay, now let's multiply 2 with radius. 2 into 2 meter, 2 into 2 meter, radius is 2 meter, so we will multiply it with 2, and after multiplying it, 2 2s are 4, 2 2s are 4, and that will be here, it will be meter. So the answer of this question, E part of question number 9 is 4 meter. So the diameter of the circle is 4 meter. Okay. So this was the E part of question number 9. So rest of the parts, जितने भी 3-4 parts पढ़े बेटा, all these parts of question number 9 of exercise 14.1 you are going to do by yourself. Okay, तो बाकी parts आप खुद करिएगा and definitely you will be able to solve it because these are very simple one. Okay, so let's move to question number 10 of exercise 14.1. So the next question is question number 10. So what is given in question number 10? In question number 10, find the radius of the following circles if diameter r. तो देखिए अब हमारे पास हमें क्या निकालना है? Now we have to find the radius and the diameter is given. देखिए पिछले सम में the radius was given and we have to find the diameter, but in this the sum is opposite. इसमें हमें diameter दिया हुआ है and we have to find the radius. Okay, so let's do it. Question number 10. So before starting question number 10, write radius is equal to diameter upon 2. या तो आप ये लिख लीजिए और diameter divided by 2. ओके, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते थे कि दोनों का मतलब एक ही है. डायमीटर अपॉन 2, दैट मीन्स अपॉन 2 मीन्स डिवीजन. डिवीजन का साइन ऐसे लिखना कि वो भी डिवीजन है. आपको पता है फ्रैक्शन इज डिनोमिनेटर ऑलवेज डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर. ओके, सो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 और डायमीटर डिवाइडेड बाय 2. दोनों तरह से आप लिख लीजिए. मैं दोनों तरह से सम करवा दूंगी आपको, एक सम वैसे और एक सम ऐसे, so that if you will be having any doubt that will be clear. Okay, let's do A part. Okay, so then in the A part, find the radii of the circle if their diameter are. तो radii निकालना है हमें and the diameter is already given. So the first one is 20 centimeter. 20 centimeter. Okay, is 20 centimeter. So diameter of the circle, diameter of the circle is equal to, the diameter of the circle is equal to 20 centimeter. Okay, and we have to find the radius of the circle. We have to find it. So the radius of the circle is diameter upon 2. That is diameter upon 2. Diameter upon 2. So diameter कितना है? That is 20. So the diameter is 20 divided by 2.
सो यू कैन डिवाइड डू द डिवीजन इन द रफ. आप जो डिवीजन है वो रफ में कर सकते हैं. दिस इज अ वेरी सिंपल वन, बट स्टिल किसी को अगर कोई डाउट है, 20 डिवाइडेड बाय 2. 2 10 1s are 2, 0, या सिंपल 2 10s are 20. सो द आंसर इज 10. आई डोंट थिंक कि इसकी भी डिवीजन की जरूरत पड़ेगी. दीज आर द वेरी मोस्टली जो ये डिविजन होती है, दीज आर द वेरी सिंपल वन. 20 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 10. So the answer is 10 centimeter. So the radius of the circle is 10 centimeter. Radius of the circle is 10 centimeter. Okay, देखिए एक मैंने अभी आपको इस तरीके से सॉल्व करके दिखाया. तरीका दोनों का सेम है. Nothing is so different in this. ठीक है, but I have just written the two methods. Suppose अगर किसी को ये समझ में नहीं आता तो वो इस चीज को फॉलो कर लेगा. Clear? The radius was the diameter was given, that is 20 centimeter. Diameter of the circle was 20 centimeter, and we have to find the radius of the circle. So the radius of the circle is equal to diameter upon 2, and after dividing diameter, that is 20 with 2, we got the answer, that is 10 centimeter, and this is our radius. Okay, so let's do one more sum with this second method. Okay, that is, let's do B part. Let's do the B part of this question. The B part is 12 centimeter. So in the B part, you have to find the radius where the diameter is 12 centimeter. So diameter of the circle, diameter of the circle is equal to, diameter of the circle is equal to 12 centimeter, 12 centimeter. Okay, and we have to find the radius. हमें क्या निकालना है? Radius. Radius of the circle. So the radius of the circle हमें निकालना है, and we will use the second method, जो second तरीके से आप लिख सकते हो, that is diameter divided by 2. Okay, you can write it in the fraction form, or you can write it like this as well. So diameter divided by 2. So the diameter is 12. The diameter is 12, and let's divide it with 2. Diameter is 12 divided with 2. So after dividing 12 with 2, you will get 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? You will get 6. So this is 6 centimeter. This is 6 centimeter. So the radius of the circle is 6 centimeter. Okay. So the diameter was given 12 centimeter, and we have to find the radius. So the radius of the circle is diameter divided by 2. That is 12 divided by 2, and after dividing it with 2, you will get 6 centimeter. Okay. So this was the solution. This is the solution of the B part of question number 10. So you can just pause it here and write it down. Now let's do one more part of the same sum, and rest of the parts of this question number 9 and 10 both you are going to do by yourself. Okay, अब इसका एक और पार्ट करेंगे, और बाकी जितने भी पार्ट्स हैं 9th और 10th क्वेश्चन के वो आप खुद करेंगे. Okay, so one more part is, that is, let's do the D part. D part करते हैं. Okay, the D part is 38 decimeter. 38 decimeter. So diameter of the circle. Diameter of the circle is 38
decimeter. Okay, radius of the circle, radius of the circle, ये हमें फाइंड आउट करना है. रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट विल बी diameter divided by 2. So the diameter is 38 and we will divide it with 2. So 38 divided by 2 will be 19 and it will be decimeter. Okay, so 38 divided by 2 will be 19. आप इसकी डिवीजन चाहे करके रफ में देख लीजिए. ओके, so you can divide it in the rough. 38 divided by 2. 2 ones are 2, 1 minus 2 nines are 18. So the answer is 19. ओके, तो ये आपको रफ में करना है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है बेटा. वैसे काफ़ी चीज़ अपने अगर आपको 20 तक टेबल आते हैं, यू कैन डू इट वेरी इजीली. सो द डायमीटर, सो द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 19 decimeter. This is the solution of the D part of question number 10. Okay, so rest of the parts of question number 9 and 10 you are going to do by yourself only, class. Okay, so with this I'm just ending the session here only. So I'll see you again very soon in our next session. So till then everybody have a good day.